Good morning, students. I congratulate to all of you for being in third class. I am your computer teacher. I, Suman, committed to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Students, today we will read Chapter 1, A Computer System. In this chapter, we will read about hardware and software, components of the CPU, IPO cycle, flow of data in computer system. So, have you ever wondered how the keyboard, mouse, speaker and various other devices work together at the same time? You can draw picture using mouse and also listen to music using speakers. And all this will appear on the monitor at the same time. Now let me tell you how computer work. Here you see some computer devices. Connection please. You have seen letters, numbers and characters are in this device and you are giving instruction by typing its button. So it is input device. So write I for this. Okay, you see this is speaker and sounds are coming out. So it is output device. Write O for this. And you see monitor. It is showing you result. Whatever you enter from the input device, it shows you result. So it is output device. So write O for monitor. Okay, this is CD and it is storage device. You can store data on this. So write S for this. And this is mouse. You give instruction to computer by clicking its button. So it is input device. Write I for this. And this is pen drive or flash drive. It is also storage device. So write S for this. Okay. Now next page, C. This is your television. And let's consider a television system showing a cartoon films. The television system has different parts that work together. And which parts? These parts are screen, remote control and set-top box. These parts can be seen and touched, but the cartoon film can be seen, but you cannot touch it. And so, a computer also has different parts that work together just like your television. Okay? It has keyboard, mouse, monitor, printer and so on. And these parts can be touched. So it is called hardware. You use Paint to make drawing on the computer? Yes, Paint is a software because you cannot touch this software. You can only see on the screen. No? So it can be seen but cannot be touched. Hardware and software together form a computer system. कोई भी कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से बनता है. ठीक है ना. ये दोनों पार्ट बहुत ही एसेंशियल हैं, नेसेसरी हैं. ठीक है. सो हार्डवेयर, सी दिस चार्ट. कंप्यूटर सिस्टम डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. वन इज हार्डवेयर and second is software. Hardware further divided in three parts. Input devices like keyboard, mouse, processing device, your CPU, and output device like monitor, printers, speaker, है ना? And other part is software. Software
is also divided in two parts. System software. System software वो होते हैं बेटा जो सिस्टम को कंप्यूटर को चलाने में ऑपरेट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है. एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एनी प्रोग्राम in computer system we can call it application software like MS Paint, MS Word. Okay, now let's further read about hardware. The part of a computer system that can be seen and touched. The part of computer system that can be seen and touched are called hardware, है ना. And it is in a television system, a screen, remote control and set top box, है ना. These are hardware. And similarly in computer system, keyboard, mouse, monitor, printer are hardware devices. Okay, now we will read about types of hardware devices. Hardware devices are of three types: input devices, storage devices and output devices. We will read about input devices. Okay, a device used to enter data either by typing it or clicking. ठीक है ना, किसी भी तरह से अगर आप इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दे रहे हो तो वो हो जाएगा आपका इनपुट डिवाइस. ओके, डाटा हैज़ नो मीनिंग. डाटा मीन्स एनी काइंड ऑफ डाटा लाइक ऑडियो, वीडियो, म्यूजिक और कोई भी कैरेक्टर आप कीबोर्ड से टाइप करके एंटर करते हो ना, वो सब डाटा है. ठीक है. सम इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम एंड सो ऑन. ठीक है ना, दीज आर द इनपुट डिवाइसेस. लेट्स रीड अबाउट कीबोर्ड. कीबोर्ड is used to type letters and numbers and characters. You see letters, A to Z letters available on keyboard. Yes, and number 0 to 9 available on keyboard. Character means comma, hyphen, full stop. These are the characters. Okay, and you type it. Okay, when you press these keys, that is called typing. Okay, whenever you press any keys from the keyboard, that is called typing. For example, if you have to type your name, then you are pressing alphabet, that is called typing. Next is mouse. You see, mouse has 3 buttons. Here is right button, left button and scroll bar. This scroll wheel is called scroll wheel. Okay, it is called clicking whenever you press button of mouse. Okay, we use mouse to select and point at the things on the monitor. मॉनिटर पे आप जो भी देख रहे हो आप उसको ओपन करना चाहते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पॉइंट इट, सेलेक्ट इट, है ना. जैसे कि आपको पेंट ओपन करना है तो आप क्या करोगे, आप उसको पेंट प्रोग्राम को वहाँ पे सर्च करोगे, क्लिक करोगे, मिल गया, फिर आप उसको डबल क्लिक करके ओपन करोगे या राइट क्लिक करके ओपन का ऑप्शन चूज करोगे, है ना. सो क्लिकिंग, by clicking you give the instruction to the computer. It is also input device. Next is scanner. We use scanner to scan printed text or picture. बच्चे कंप्यूटर में हमने इनपुट दिया by typing keyboard, है ना, by clicking the mouse. एंड स्कैनर में अगर आपके पास कुछ भी आपके हैंड में कोई फिगर आपने ड्रॉ करके रखा है या आपकी बुक में कोई बहुत अच्छी पिक्चर है तो आप उसको स्कैनर से स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर सेव कर सकते हो. जैसे आपकी बुक्स में आपको कोई चैप्टर बहुत पसंद है, आपको उसका प्रिंट आउट चाहिए तो आपको कंप्यूटर में पहले उसको इनपुट करना पड़ेगा. तो स्कैनर क्या करता है ना, उसकी फ़ोटो खींचकर कॉपी करके कंप्यूटर में सेंड कर देता है. फिर कंप्यूटर से आप उसको सेव भी कर सकते हो, उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो. सो स्कैनर वर्क लाइक दिस. ओके, इट इनपुट पिक्चर्स, सो इट इज़ ऑल्सो इनपुट डिवाइस. Next is our processing devices. Processing device is very important and without it, your computer cannot work. Okay. Also, input devices are necessary. Without it, you can't give instruction to the computer, na? But processing device. Look, this is CPU, है ना? And within this, all the processing of your data, whatever you have input, है ना? It process data and give you result.
A device that converts the data received from an input device. It received data from input device and meaningful form, convert it into meaningful form, process it and give you result to the monitor or input devices. Okay. Next, let's review these questions. Riya made a drawing using paint. The output can be seen on the, where we see output? Monitor or CPU? CPU is the processing device. Monitor showing you your drawing. So, monitor. Okay. Next, Naman wants to see a handwritten letter on the monitor. Naman wants to see a handwritten letter on the monitor. Handwritten, not by typing. It can be done using CPU or scanner. I told you by scanner you can give your handwritten or drawing to the computer. Okay, scanner is used to take pictures and send it to computer. So scanner. Misha wants to convert data into information. The processing will be done by data into information. So this is the processing work, and processing work will do mouse or CPU. It is CPU. Okay. Next is Richa wants to open Paint. And which device should she use? Mouse or keyboard? Mouse. By clicking and by pointing that Paint program, she can open. So mouse is used. Okay. Now we will read about output devices. Okay, how does it work? Output, a device used to display the result after processing data. It display the result after processing data is called output device. ठीक है, जब आप इंस्ट्रक्शन देते हो तो वो CPU प्रोसेस करके आपको रिजल्ट मॉनिटर पे शो करता है ना. सब कुछ आप कहाँ पे देखते हो? प्रोग्राम्स, इंस्ट्रक्शंस, मॉनिटर पे. ठीक है. सो इट डिस्प्ले द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग डाटा. सम आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स, हेडफोन, प्लॉटर्स एंड सो ऑन. बच्चे, मॉनिटर आपको रिजल्ट शो करता है, सो आउटपुट डिवाइस है. प्रिंटर्स आपको प्रिंट आउट निकाल के देता है ना, तो ये भी आउटपुट डिवाइस है. स्पीकर से साउंड, यू लिसन साउंड फ्रॉम द स्पीकर, सो स्पीकर इज ऑल्सो आउटपुट डिवाइस है ना. स्पीकर एंड हेडफोन्स आर सेम. ओके, वर्क लाइक सेम. ओके. नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट software. Software also a very important part of computer system. Without software you can't see, you can't on. Software. Okay, computer is a machine. You have to give instruction to the computer to work. कंप्यूटर तभी काम करेगा जब आप उसको कोई इंस्ट्रक्शन दोगे. तो वो इंस्ट्रक्शन आप हार्डवेयर के थ्रू दोगे. कैसे दोगे? उसके लिए आप कुछ भी टाइप करोगे, है ना. किसी तरह से आप उसको इंस्ट्रक्शन दोगे तभी कंप्यूटर वर्क करेगा. तो सॉफ्टवेयर पता है क्या है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है. बहुत सारे इंस्ट्रक्शन का एक सेट रेडी कर दिया, दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम ऑल्सो. एक प्रोग्राम बनाया आपने, विच मीन्स सेट ऑफ प्रोग्राम. सो अ सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. ओके, दैट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू. कंप्यूटर ने क्या करना है? अगर आपने टाइपिंग करना है तो आप MS वर्ड ओपन करोगे. ड्राइंग करनी है तो MS पेंट ओपन करोगे, है ना. और अगर आपने कैलकुलेशन करनी है आप कैलकुलेटर ओपन करोगे. ठीक है. तो दीज आर द सॉफ्टवेयर. इट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर. यू कैन सी अ सॉफ्टवेयर ऑन द कंप्यूटर वाइल वर्किंग ऑन इट, बट यू कैन नॉट टच इट. ओके. Software, you can see the software on the monitor but you can't touch it. Just like in television you are watching cartoon but you can't touch it. Similarly, you are watching software, you are working with it but you can't touch it.
So software can be seen but cannot be touched. Okay. A television needs many types of software to make its hardware devices work. There is a software to change the channel, to change the volume, and to run movie. Similarly, a computer system also needs software to run its hardware. When you turn on a computer, an important software starts working. It prepares the computer for use. This software is called operating system. बच्चे operating system कंप्यूटर को जब आप स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट करने के लिए हमें एक सिस्टम चाहिए जो कंप्यूटर को स्टार्ट करे और जब तक कंप्यूटर वर्क करे, है ना, कंप्यूटर को चालू रखे, ठीक है ना. सो कंप्यूटर को ऑन करने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए जी एक सॉफ्टवेयर चाहिए, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम.